वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर 20। तो आज हम लोग देखेंगे सम क्विजेस ऑन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, जो कि यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये फर्दर आने का चांसेस भी है। तो आप लोग अगर यूजीसी नेट एस्पिरेंट, गेट एस्पिरेंट, सेट और एसएसबी एस्पिरेंट हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो शुरू से एंड तक वीडियो को देखना। So the first question is, The Angel in the House is the title of the poetry collection book by Des. So the question is that The Angel in the House is the title of the poetry collection book by Des. इनमें से कौन The Angel in the House जो पोएट्री कलेक्शन बुक है कौन लिखे हैं? सो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ऑस्कर वाइल्ड, कोवेंट्री, पैटमोर। इनमें से कौन से ऑथर हैं जो द एंजल इन द हाउस को लिखे हैं? So your answer is Coventry Patmore was an English poet and literary critic. He is best known for his book of poetry, The Angel in the House, a narrative poem about the Victorian ideal of a happy marriage. तो ये जो कलेक्शन ऑफ पोएम है वो एक नैरेटिव पोएम है, लॉन्ग पोएम है, जो कि विक्टोरियन आइडियल हैप्पी मैरिज के बारे में बोलते हैं। Which of the following meaning fits appropriate to the term ज्ञानो criticism? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, तो आप लोग ये क्वेश्चन को देख के जाना है। Which of the following meaning fits appropriate to the term ज्ञानो criticism? Concentration of women as reader, female framework for dealing with works written by women, criticizing male writers who wrote about women. So इनमें से कौन सा आंसर है? आप लोगों को आंसर निकालना है। Gyanocriticism, a term coined by Ellen Showalter, is a form of feminist literary criticism focusing on women as writers and exploring the unique characteristics of women's writing and literary tradition. So आप लोगों का आंसर कौन सा होगा? फीमेल फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग वर्क्स रिटन बाय वीमेन। सो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है? ऑन वीमेन एज राइटर्स एंड एक्सप्लोरिंग unique characteristics of women's writings and literary tradition. Understand? Next, who wrote the history of sexuality? हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी कौन लिखे हैं? वुल्फगैंग आयर, मिखेल फौकॉल्ट, एलन सीनफील्ड। So the history of sexuality is a 4-volume study of sexuality is the Western world by the French historian and philosopher Michel Foucault, in which the author examines the emergence of sexuality. So the history of sexuality 4 वॉल्यूम का स्टडी ऑफ सेक्सुअलिटी जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं और ये लिखे हैं फ्रेंच हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर मिखेल फौकॉल्ट। Camera lucida is a seminal work by whom? Camera lucida is a seminal work by Ronald Barthes, Jacques Derrida, Laura Mulvey. सो इसमें से कौन है जो कैमरा लूसिडा लिखे हैं? सेमिनाल वर्क है। कैमरा लूसिडा रिफ्लेक्शंस ऑन फोटोग्राफी इज ए शॉर्ट बुक published in 1980 by French literary theorist and philosopher रोनाल्ड बार्थ। कौन लिखे हैं? रोनाल्ड बार्थ 1980 में।
Who is the author of the notable essays The Straight Mind, The Category of Sex, and One is Not Born of Women? कौन लिखे हैं ये सब बुक? Who is the author of notable essays The Straight Mind, The Category of Sex, and One is Not Born of Women? Monique Witting, Donna Harvey, Angela McRobbie. So your answer is Monique Witting was a French author, philosopher, feminist theorist. Her groundbreaking work is titled The Straight Mind and the other essays. She published her first novel, Eloponics, in 1964. Eloponics, 1964. Who among the following is not associated with this standpoint theory? देखो कैसे कैसे वर्ड्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं और ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, और अगर ये आप लोग पढ़ के जा रहे हैं तो सिलेक्शन मतलब आप लोगों का हो सकता है। तो स्टैंड पॉइंट थ्योरी को पढ़ के जाना होगा, सेक्सुअलिटी को पढ़ के जाना। ये जो टर्म आ रहा है क्वेश्चन में, ये सब को आप लोगों को पढ़ना होगा। Who among the following is not associated with the standpoint theory? कौन सा standpoint theory में associated नहीं है? Sandra Harding, Donna Haraway, Judith Butler. So, prominent standpoint theorists include Dorothy Smith, Nancy Hartsock, Sandra Harding, Donna Haraway, Patricia Hill Collins, and Elysian Jagger, who expanded the theory. तो ये लोग standpoint theory में हैं, जैसे कि डोरोथी स्मिथ, नैन्सी हार्टसॉक, देन यो सैंड्रा हार्डिंग, डोना हार्वे, पेट्रिसिया हिल कॉलिंस, ये सब एलिशन, ये सब जैगर, ये सब क्या है आप लोगों का स्टैंड पॉइंट थियोरिस्ट। और कौन सा नहीं है? सो जूडिथ बटलर। Who among the following propounded the male gaze theory? Male gaze theory कौन propound किए हैं? लॉरा माल्वे, सारा सुलेरी, क्रिस्टियन मैच। इनमें से कौन है जो मेल गेज थ्योरी प्रोपाउंड किए हैं? Laura Mulvey's male gaze theory, articulated in her 1975 essay Visual Pleasure and Narrative Cinema, argues that mainstream cinema often objectifies women. So this is the male gaze. Who among the following authored the book? The book Reproduction of Mothering. So Reproduction of Mothering कौन लिखे हैं? लॉरा मल्वे, नैन्सी जोदोरो, and Sarah Suleri. So Reproduction of Mothering, Psychoanalysis and the Sociology of Gender book. So देखो बुक का सबटाइटल भी आता है, तो इसको आपको याद करना होगा। द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग, साइकोएनालिसिस एंड द सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर बुक बाय नैन्सी चौधरो। द reproduction of mothering comes from a time in second wave feminism when the personal was political. Who coined the term feminist jurisprudence? Who coined the term feminist jurisprudence? कौन feminist jurisprudence coined किए हैं? Anne Scales, Flavian Agnes, Betty Friedan. So your answer is the term feminist jurisprudence was first used in the late 1970s by Anne Scales during the planning for Celebration 25, a conference celebrating the 25th anniversary of the first women graduating. This is feminist jurisprudence first used in late 1970s by Anne Scale. Next, the phrase history repeats itself
first as tragedy, second as farce is attributed to. कौन बोले हैं इसको? History repeats itself. First as tragedy, second as farce is attributed to. कौन बोले हैं? Sigmund Freud, Karl Marx, Goethe. So your answer is the phrase history repeats itself. First as tragedy, second as farce is attributed to Karl Marx, and it suggests that historical events often repeat, but the second time they appear less serious. So these are the few questions on literary criticism and theory. So how कैसे लगा आप लोगों को ये वीडियो, ये क्वेश्चंस? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना और मेरी वीडियो को देखते रहना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।